आई काइंड ऑफ फील बैड सेइंग दिस बट भाई जितना क्लिक बेट अपने इंडियन क्रिप्टो यूट्यूबर्स करते हैं ना इट्स जस्ट पथेटिक. उनके थंबनेल्स देखना, इथीरियम प्लस 3000% पम्प, शिबा इनू आज होएगा 10,000% पम्प. आई एम लाइक ब्रो व्हाट बुलशिट. प्लीज़ 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 टेलीग्राम टिप्स से दूर रहो, प्लीज़ उनसे दूर रहो. बेसिकली सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, हाउ डू यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स, मार्केट ट्रेंड्स को क्या है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक्सेट्रा. उसके बाद ट्राई डूइंग योर ओन थिंग्स. लाइक डोंट जस्ट वॉच द ट्यूटोरियल. आपने ट्यूटोरियल देख लिया कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ओपन ट्रेडिंग, यू ओपन द चार्ट एंड यू योर सेल्फ शुड बी एबल टू ड्रॉ दैट ट्रेंड. So hey guys, today we have with us Govind, who is 18-year-old and he is a crypto trader. हम सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में जानेंगे. So welcome, first of all, welcome Govind to this show called Web3 with Ayush. And let's start this complete video with your little introduction. So Ayush bro, thank you so much for having me. I mean, glad to be on this show. So to introduce my own self, hi guys, myself Govind. I'm a crypto trader, a front-end developer, and I'm learning blockchain development as well. So yeah, I think that was my introduction. And I have my own YouTube channel as well. It's like crypto like never before. I started my own trading playlist over there, and we would have more videos about Web3, smart contracts, and all of that. So Ayush bhai, मैं self promotion कर रहा हूँ, don't mind. बिल्कुल. अरे ब्रो, एनी टाइम. एंड yeah, so basically let's deep dive into your journey, bro. How you started at the age of 17. 17 is a very young age, and crypto and all of that is right now something जो चीज़ें काफ़ी नई हैं, लोग जानना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं. So how you started your journey, what's all about, let's talk about that. Okay, so I started my journey back in 2020. I think it was December of 2020. मैं अपने मौसी के घर पे था, which was in Pune, and I was learning about stock market, to be honest. Then one of my cousin brothers, he came to me and वो मेरे को बोला, भाई देखो बिटकॉइन मालूम है क्या क्या होता है. I was like, हाँ सुना है but I don't know what exactly it means. फिर I started learning about it, what is Bitcoin, what is a blockchain. उस टाइम में तो blockchain क्या था, I did not even know that. फिर उसके बाद धीरे धीरे जाते गए. So I eventually started my journey as an investor. But after realizing this one thing, that investing in crypto would give me a long-term wealth if I hold it for a really long term. But to, let us say, make this as one of my professions, I need to start trading, and more importantly to make good amount of money from it. क्योंकि मैं hold करके तो रख लूँगा and वो मेरे को long term में wealth देगा. But to have like a short term gains or something, I needed to start trading. फिर मैं ट्रेडिंग के बारे में सीखना स्टार्ट किया. आई मेड अ फ्यू गुड ट्रेडिंग फ्रेंड्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम स्टॉक मार्केट, बट द टेक्निकल पार्ट इज़ क्वाइट सेम दो. लाइक जो इंडिकेटर्स वहाँ पे आ रहे हैं वो सेम इंडिकेटर्स यहाँ पे भी आते हैं. सो या, एंड वहीं पे से ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई. देन सो बेसिकली तब तो तुमने ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की थी, यू वाज 17. सो तुमने बेसिकली पढ़ना कहाँ से शुरू किया, व्हाट वर दी सोर्सेज बेसिकली ब्रो? सी द पॉइंट इज़ कि क्रिप्टो को लेके जब एक साल पहले अगर तुमने शुरू किया था तो बेसिकली एक साल पहले शुरू करने में पहले काफ़ी कम सोर्सेज थे एज़ कम्पेयर टू अभी है. डेफिनेटली हर साल बढ़ते जाएंगे एंड डेफिनेटली इसमें जितना लोगों को वैल्यू दिख रहा है, सारी चीज़ दिख रही है, तो डेफिनेटली चीज़ों का सोर्सेज बढ़ते जाएगा. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर नॉट दैट काइंड ऑफ सोर्सेज जिससे तुम पढ़ के एकदम से ट्रेडिंग शुरू कर सको. सो व्हाट वर दैट सोर्सेज एंड हैव यू स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट? Okay, तो इसमें two things. पहले let's talk about sources, and इसमें I really want to tell something to the, I think, people who have now started to get into the market. I kind of feel bad saying this, but भाई जितना क्लिकबेट अपने इंडियन क्रिप्टो यूट्यूबर्स करते हैं ना इट्स जस्ट पथेटिक. उनके थंबनेल्स देखना, इथीरियम प्लस 3000% पम्प, शिबा इनू आज होएगा 10,000% पम्प. आई एम लाइक ब्रो व्हाट बुलशिट. ऐसा कभी हुआ नहीं, ना ही होने वाला है. तुम क्यों ऐसे न्यूबी बिगिनर्स को अपने लाइक वाई डू वांट टू ट्रैप देम बेसिकली. बट इवन आई अंडरस्टैंड कि ठीक है वो एक क्लिकबेट स्ट्रैटेजी है, दैट्स फाइन. बट
एक बिगिनर को तो ख़राब लगता रहेगा ना. सो दिस वॉज वन थिंग. सो यू नो, ट्रस्ट ओनली जेन्युइन पीपल इन द क्रिप्टो फील्ड. एंड तुमको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो ऐसे बोलेंगे कि दिन के $1,000 कमाओ, दिन के $2,000 कमाओ ट्रेडिंग से. स्टे अवे फ्रॉम दैट, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट, such kind of YouTubers. And secondly, coming to from where did I learn? So जैसा आपने बोला कि उस टाइम पे not good resources were there. There was this channel Jupiter Crypto or Crypto Nomad. मेरे को he changed his name. I think it's Crypto Nomad right now. उसका एक कोर्स है Udemy पे, बिगिनर क्रिप्टो ट्रेडिंग. तो वहाँ से एक और थोड़ा सा बेसिक्स कि ओके इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, दिस इज़ माई सपोर्ट, दिस इज़ माई रेजिस्टेंस, हाउ डज अ प्राइस बिहेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन आई मेड अ फ्रेंड, he stays in Mumbai, he's a stock market trader, and then we like spoke some stuff, and then he told me कि उसकी पूरी family ही trading में involved थी. Then we both collaborated a lot, and फिर उसके बाद से I think I went a bit on the intermediate and advanced level. और अभी जो strategy मैं यूज़ करता हूँ, I think me and my friend, both of us has made it together. तो लाइक 60-70% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा था, एंड देन 40-50% कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था. सो या, कोलैबोरेशन ओवर कॉम्पिटिशन एनी डे. सो या, आई थिंक दिस वाज हाउ आई लर्नड. Okay, so you did Udemy का course and then you started trading. So that okay. So okay. क्रिप्टो नोमैड है जुपिटर क्रिप्टो. मैं आपको उसका नाम भेज दूंगा आफ्टर द स्ट्रीम एंड्स. सो या, ही हैज़ अ गुड कोर्स एंड ही इज़ अ जेन्युइन गाय. आई कैन गारंटी दैट. ही डजंट क्लिक. ओके, सो कमिंग बैक, ये जो आपने पॉइंट बोला ना, ये लोग को बहुत लगता है कि मैं एक कोर्स कर लूँगा, मैं कोडिंग सीख जाऊँगा, मैं एक कोर्स करूँगा, मैं ट्रेडिंग सीख जाऊँगा. ऐसा ये एक ड्रीम वर्ल्ड है टू बी ऑनेस्ट. तो यू नो, एंड आफ्टर लर्निंग द बेसिक्स, उसके बाद एंड ऑनेस्टली अगर आप यूट्यूब पे टाइप करते हो ना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, 5 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, 15 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, आपको बहुत आ जाएंगे, बट none of them quite work. And the biggest flaw which I saw in the market was, लोग स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, दे आर जस्ट टेलिंग द नेम ऑफ द इंडिकेटर्स एंड दे आर बैक टेस्टिंग. मैं बोलता हूँ अगर आप एकदम बिगिनियर हो ना एंड आप एक यूड्यूमी कोर्स या आप एक यूट्यूब का वीडियो देख के आ रहे हो विच हैज़ एक्सप्लेन यू द स्ट्रैटेजी, एंड उसके बेसिस पे आप रियल कैपिटल से रियल ट्रेडिंग चालू करोगे ना ब्रो, यू विल गो रेक्ट. बिकॉज सी, बैक टेस्टिंग इज़ ग्रेट. मैं अभी इफ़ आई कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी, मैं खुद बहुत बैक टेस्टिंग करता हूँ, बट बैक टेस्टिंग करना से आई वुड बेटर सजेस्ट आप बैक टेस्टिंग कर लो आपके स्ट्रैटेजी के बारे में, गेट अ गुड ग्रिप ऑन स्ट्रैटेजी. उसके बाद थोड़े पेपर ट्रेड्स कर लो. यू नो, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद रियल मनी, डू सम पेपर ट्रेड्स कि मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा लिया है, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया है. Give me a second. Just really sorry to interrupt you. What is paper trades and all of that? Could you please explain थोड़ा सा? Then you can again go with the flow. तो इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वो बस नाम कॉम्प्लिकेटेड है. पेपर ट्रेडिंग इट्स बेसिकली ट्रायल करना है कि मैं अपने पैसों से लाइक अभी मैं फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूँ, आई हैव टू सेलेक्ट द लेवरेज, आई हैव टू सेलेक्ट द कॉइन, आई हैव टू सेलेक्ट द कैपिटल. वो सब नहीं करके मैंने बैक टेस्टिंग कर ली, मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी पे विश्वास हो गया एंड बस मैंने अपना पोजीशन ओपन कर दिया है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. दैट्स इट. तो ट्रेडिंग विदाउट इन्वॉल्विंग मनी, दैट्स इट. सो Okay, now you can go with the flow. Yeah, हाँ, तो एक बार आप बैक टेस्टिंग कर लो बट डू पेपर ट्रेडिंग, क्योंकि उससे आपका प्रिडिक्शन एंड कन्विक्शन खुद के अंदर आएगा कि देखो यार मैंने बैक टेस्टिंग कर ली एंड मैंने पेपर ट्रेड करके अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. क्योंकि ऑनेस्टली वाइल ट्रेडिंग इमोशन इज़ योर बिगेस्ट एनिमी, दी बिगेस्ट एनिमी. एंड यहाँ पर मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा, इफ़ यू एनी टाइम ओपन योर पोजिशन ना, अभी आई कैन ओनली टॉक अबाउट बाइनेंस, वहाँ पे लिख के आते रहता है कि -20, -30 या +100, +200, -50 वॉट एवर. वो देखते मत रहा करो उसको, आप पोजीशन ओपन कर लो और आप कैंडल्स देखा करो. मेरे को एक सिंपल बोलो, -30 हो गया, आप वो देख के क्या कर लोगे? रैदर सी द चार्ट, सी वाई आर यू गोइंग इन माइनस,
क्योंकि एक बार आप कॉन्स्टेंटली वो माइनस माइनस दिखते रहोगे ना, वहाँ पे आपका इमोशन आना स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर आपको लगेगा कि छी यार -40 -50 होगा, आई हैव टू क्लोज दिस पोजीशन, क्लोज कर देगा, आप क्लोज कर दोगे एंड एकदम से फिर उल्टा ही हो गया मार्केट में. सो प्लीज़ गेट रिड ऑफ योर इमोशंस एंड या एंड देन ओके. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट, एक बार मेरा यूडेमी पे से हो गया था ब्रो. आई थिंक मैंने सिर्फ 2 महीने तक, पहले तो मैं आई थिंक आई हैव सीन एवरी वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड वॉट नॉट, बट नन ऑफ देम आई फाउंड रियली हेल्पफुल. मैंने रात रात भर जाग के बैक टेस्टिंग करके देखा, बट नन ऑफ देम वर हेल्पफुल टू बी ऑनेस्ट. Then I met this friend of mine, stock market trader. Both of us worked together on a strategy, and that I think works pretty well for me even now. So yeah. Okay. That's great. That's pretty great. And okay, let's talk about money now, bro. Everyone is right now. I am also personally interested in something which you earned and that kind of stuff. Chalo. And you can share ranges and that kind of stuff, anything which works for you. Could you please tell us that how much range of money you have earned in the past year, or we can say that जो भी तुमने अभी तक के क्रिप्टो ट्रेडिंग से कमा, any ranges if you can give us कि इतना kind of profit I have made. So yeah, it would be really helpful. मैं very honestly speaking, I don't remember the exact amount of money I've made, but the amount of profits I can make per day while trading would any day be more than $80 per day very easily. क्योंकि भाई मैंने 1.5 ईयर्स तक करी है मैंने उतनी मेहनत. आई स्टिल रिमेंबर यू शुड स्टे अवेक टिल 5:30 इन द मॉर्निंग एंड जस्ट कीप ऑन कॉन्स्टेंटली बैक टेस्टिंग इट. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के देख रहा हूँ कि यार ये अभी अप ट्रेंड में है, आई शुड नॉट ओपन अ शॉर्ट पोजिशन. ये डाउन ट्रेंड में है, आई शुड नॉट ओपन लॉन्ग पोजिशन. 200 EMA के ऊपर है तो हाउ इज इट रिएक्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो 1.5 साल की मेहनत के बाद आई हैव कम टू दिस लेवल कि यार मैं दिन का मिनिमम $80-90 आई कैन earn for myself. So yeah. Okay, so let's figure it out. $80-90 कितना होता है इंडियन रुपीस में? Roughly 7,000 के आसपास. 7,000 के आसपास. 7,000. So guys, this is insane. 7,000 rupees in a day. Wow. Do you know that engineers earn 800 rupees or 900 rupees per day, 1,000 रुपये के अराउंड पर डे for like अगर वो जो जॉब करते हैं उसमें एट द इनिशियल स्टेज. एंड यू आर वाओ, दैट्स ग्रेट. सो अगेन लेट्स टॉक अबाउट दे से राइट कि बट अगेन सी लोगों को क्या वो एंड सक्सेस दिखता कि यार ये तो दिन का $100 निकाल सकता, दिन का $150 निकाल सकता. पीपल डोंट सी द हार्ड वर्क. दे से राइट कि अगर मेरे को एक झाड़ कट करना है, I would spend 95% of my time in sharpening the axe. It's the exact same thing. So trust the process, believe in the process, and even you will reach that level. Because I mean, I have a really firm belief in this that your skills matter the most. So yeah, keep polishing them. Yeah, definitely. Chalo, my next question is very important from the Indian perspective. If someone is from outside India, then this will, I think so, don't this question will not be that much important, but if someone is watching from India, then definitely, bro, how you convince your parents? Most important part, तुम पेरेंट्स को कन्विंस कैसे कर लिए कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करूंगा और ये सारी चीज़ों में मैं घुसना चाहता हूँ? I think my answer won't make you really happy, but my dad is supportive, to be honest. My parents are really supportive. When I told them ना कि पापा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, can I have capital to start trading, he was like हाँ बेटा कर लो dude. So मैं बोला ना कि उस टाइम पे I was in Pune. I still remember his WhatsApp message and मैंने वो पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपने गैलरी में उसको स्टार मार्क करके रखा है. बिकॉज दैट टेक्स्ट मैसेज ऑफ हिज रियली टच मी. उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बोला था कि हाँ बेटा कर लो. I'm just repeating his words. हाँ बेटा कर लो. It's not about if you win or if you lose. It's important that you learn from it. So I think massive respect and a lot of gratitude towards my parents who allowed me, and they were really supportive, to be honest. अभी जैसे I took a drop this year. I mean, I did not go to any college, and Indian parents को convince करना is again a big thing. But my dad was like हाँ ठीक है, chill है, कर लो, तुम्हारा ambition है, you can go ahead with it, and I'm there to support you. So like a lot of gratitude to him for that. Wow, that's great. That's really great, bro.
And kudos to your parents, bro, because this is very important. And the point is I want to make, यहाँ पर मैं चीज़ mention करना चाहता हूँ that if his parents believes in him, the point is that he is working that much on that particular things. And I really love that, bro, कि जो भी चीज़ें तुमने पापा को बताई, तुमने कहा कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, पापा ने तुम्हें कहा कि तुम कर लो, बट यू आर वर्किंग ऑन इट. आई एम रियली लव दैट. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ब्रो. द तो अभी जैसे आपने यहाँ पे आपने बोला कि योर पेरेंट्स आर सीइंग दैट हार्ड वर्क, यू नो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है कि वाई डू योर पेरेंट्स नॉट अग्री विद योर डिसीजंस. आप एक बार सोचो कि आपको लेट अस से एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, बट यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड. वाई वुड योर पेरेंट्स अग्री टू दिस? इफ़ यू हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ, तुमने पास्ट में कुछ उखाड़ा नहीं है, तो वो तुम पे क्यों विश्वास करेंगे? बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पर्सन, लेट अस से राम, ही हैज़ वन 5 or 6 हैकाथॉन्स, ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू ओपन सोर्स, या जो भी उसने करा है, तो ही हैज़ अ प्रूफ ऑफ वर्क बैकिंग हिम अप कि वो बोल सकता है कि देखो पापा, मैंने पास्ट में ये चीज़ें करी है, आई हैव अचीव्ड XYZ थिंग्स इन पास्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस इन मी, आई वुड इवन गो ऑन अचीविंग XYZ थिंग्स इन द फ्यूचर एज वेल. तो यू नो, एक प्रूफ ऑफ वर्क कि मैंने पास्ट में भी अच्छा चीज़ें करी है, हैव फेथ इन मी, आई वुड इवन डू द सेम इन द फ्यूचर एज वेल. दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट to convince them for anything, I would say. Okay, that's really great, bro. That's a very good advice. And okay, let's talk about the last two questions. My second question is, what advice you want to share, or what advice you want to give to the Gen Z students who wants to enter into crypto space as a trader or as a normal person who are just investing some money into crypto? So what are your advice on that? तो आई वुड फर्स्ट स्पीक फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है, टॉप ट्रेडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड. प्लीज़ वॉच दैट. मैं एक जनरल चीज़ें बोलता हूँ. नंबर वन एंड दिस हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट. प्लीज़ टेलीग्राम टिप्स से दूर रहो. प्लीज़ उनसे दूर रहो. ब्रो, लाइक पीपल शेयर दी स्क्रीन शॉट्स ऑन टेलीग्राम, लाइक बाइनेंस फ्यूचर्स 100,000% प्रॉफिट, 5,000% प्रॉफिट. डोंट, it can really be manipulated. Anything on the internet, it can be easily photoshopped. तो please stay away from the tips. And especially किसी को भी ऐसे $100 $200 देने के पहले सोचो एक बार. लाइक पीपल हैव दिस, ब्रो, कि प्रीमियम चैनल, एक फ्री चैनल और एक प्रीमियम चैनल, हम तुमको हमारे प्रीमियम चैनल में ज्वाइन करवा लेंगे, PS $100-200. एंड बिगिनर्स और स्पेशली स्टूडेंट्स डू दैट मिस्टेक. प्लीज़ अवॉइड दैट. रैदर आप खुद सोचो, आप उसको $100 पे कर रहे हो, आप उससे अच्छा $10-20 के कोर्सेज खरीद लो, आप अपने खुद के स्किल्स पॉलिश करो, एंड यू योरसेल्फ विल बी एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ अ मनी. सो नंबर वन, स्टे अवे फ्रॉम टेलीग्राम टिप्स. Number two, always use a stop loss. I was once guilty of this. Please use a stop loss. And if I were to draw a small roadmap for any person as to how he can start, बहुत बेसिक से स्टार्ट करो. मेरी चैनल पे एक वीडियो है, क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक्स पार्ट 1. It has covered most of the basic stuff, but if I were to point out certain things, बेसिकली सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, हाउ डू यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स, मार्केट ट्रेंड्स को क्या है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सेट्रा. उसके बाद ट्राई डूइंग योर ओन थिंग्स. लाइक डोंट जस्ट वॉच द ट्यूटोरियल. आपने ट्यूटोरियल देख लिया कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ओपन ट्रेडिंग, यू ओपन द चार्ट एंड यू योर सेल्फ शुड बी एबल टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन. लर्न अबाउट चार्ट पैटर्न्स. मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रियली कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट पैटर्न्स का PDF अटैच करके रखा है. Learn about chart patterns and see how those chart patterns are applicable on a particular candlestick. उसके बाद learn some basic indicators like RSI, MACD, EMA, stochastic RSI, etc. Then I think आप एक intermediate level पे आ सकते हो where please only learn price action. That's the most important part. You know, now not to praise my own self, but when Bitcoin was at $69,000 ना 2021 का नवंबर पे, मैं अराउंड 67,000 पे आई सोल्ड मोस्ट ऑफ माई होल्डिंग्स. एंड आई टेल यू द रीजन. प्राइस एक्शन इज़ दी बेस्ट इंडिकेटर. नो इंडिकेटर कैन नेवर बीट प्राइस एक्शन. नंबर वन. नंबर टू, उस टाइम पे मैं चाहिए तो मैं आयुष भाई को एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा. उस टाइम पे बिटकॉइन पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा था, एंड यूजुअली जो प्रीवियस हाई था ना, ऑल टाइम हाई ऑफ 65, यूजुअली जब ऐसे प्रीवियस हाई के पास आ जाता है ना, try avoiding buying, rather you should sell your positions. Hence two things, and most importantly price action भी like बराबर नहीं था. So three things. Price action was not correlating, bearish divergence था, and already अपने 65 के all time high पे आ चुका था.
So please master price action. It's the best thing. And I think third level पे learn a strategy. फिर उस strategy सीखने के बाद just go on back testing it, and after you're done back testing it, थोड़े paper trades करो, maybe like 20-30 paper trades. And let us say कि अगर आपने एक पेपर ट्रेड करा है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप एक पेपर ट्रेड कर रहे हो एंड आपका एक कोई पोजीशन लॉस में चले जाता है, ट्राई टू फिगर आउट कि यार ये लॉस क्यों हुआ है. अभी इफ़ आई वुड टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस से मार्केट हायर हाई बना रहा है, दैट इज इट्स इन एन अप ट्रेंड, बट उस टाइम पे आपने गलती से एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दिया है, विच रियली डजंट मेक सेंस, बिकॉज चार्ट्स कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक दिस. एंड हेंस ट्राई टू फिगर आउट एंड एक जर्नल करो कि यार मैंने ये लॉन्ग पोजीशन ओपन करी, ये लॉन्ग क्यों मेरा लॉस में चला गया. सो या आई थिंक दैट इज़ इट. एंड एक बार वो हो गया, ट्राई कन्विंसिंग योर पेरेंट्स एंड यू विल बी गुड टू गो. Definitely, that's so great, मेरे भाई गोविंद. That's really really great. Thanks for such a good advice. It's really important for me as well. I'm learning a lot from you. Let's talk about the last question we have. Why do you believe in the crypto system? Because तुम्हारे पास stocks का option था, you choose crypto. That's like, why do you believe in this space, and what are your future predictions or kind of future thinking कि ये crypto space will go boom or niche, whatever your thoughts on that. To and the whole Web3 space, and I think 2 or 3 reasons. अभी अगर आप Web3 देखते हो, the biggest quality of Web3 is it's by central authority नहीं है. अभी लेट से RBI को एक डिसीजन लेना है, वो RBI अपने अंदर के सर्कल में दे टेक अ डिसीजन. ऑन द अदर हैंड, इधर द कम्युनिटी हैज़ द पावर, एंड आई थिंक व्हेन द कम्युनिटी हैज़ द पावर, they would choose a decision which is best for their own selves. Hence, I think not having a central authority, and most importantly, if we come to smart contracts, the whole point that smart contracts are immutable, that is a really crazy thing. अब ये इंडिया में बहुत होता है, कि अभी आई एम नॉट रियली श्योर इतना होता है कि नहीं, बट पहले बहुत होता था. लाइक 4-5 साल पहले एक प्रॉपर्टी को 3-4 लोग को बेच दिया जाता था. सम ऑफ माई रिलेटिव्स वर टेलिंग मी दिस. एक प्रॉपर्टी 3-4 लोग के नाम पे आ जाती थी. बट जस्ट इमेजिन, वुड दिस बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? दिस कैन टोटली बी एलिमिनेटेड, बिकॉज वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ टोटली इम्यूटेबल. इट कैन, nobody can tamper with its code once it's written. So yeah, I think certain qualities of Web3 and blockchain, such as the distributed ledger system, it being immutable, and there not being a central authority, is I think those characteristics which make me bullish on the whole Web3 space. So yeah, to the moon, bro. Okay. That's great, bro. At the end, thank you so much for accepting my invite, bro. And I'm really really thankful the kind of things you have shared with us. Everyone who's watching this video got a lot of insights from this particular video itself. Want to record one more session with you on many other topics. There are a lot of things which I feel you can share. We will definitely get back to you again. और अगले सेशन के साथ हम बहुत जल्दी आएंगे, अगले वीडियो के साथ, एक और नई सीरीज ऑफ वीडियो के साथ. So yeah, signing off for today. We have with us Govind. आगे और वीडियो सीरीज बनाएंगे. Do check out our more of videos जो हमने बनाए हैं इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वीडियोज़ में, इस पर्टिकुलर शो में, विच इज़ Web3 with Ayush. And with that, signing off for today. Thank you so much, Govind, for accepting our invite, and let's get back to this.